Have you ever wondered that professional flute player play a simple tune or maybe Saregama Padanisa, so sweet, so melodious, but instead of if a beginner, at the same time, say beginner flute player playing the same note, same swara, correct pitch, but that is not sounds so well like professional flute player. What is the reason? There are many reasons. In between, one is Kan Swar. So today, my dear students and my dear friends, we are learning the Kan Swar. What is Kan Swar? How to play Kan Swar and how to play Kan Swar in flute. Okay, we will do a detailed discussion in this video. What is Kan Swar? Kan Swar is a swar which will come from the beginning on after notes. So adjacent notes will involve to play Kan Swar. Kan Swar बजाने के लिए आपको दो स्वर की मिलन होनी चाहिए, बट ये ऐसे जाएगा जैसे कि ग्लाइड होके जाएंगे. इट विल गो लाइक ए ग्लाइड. सो दैट इज कॉल्ड Kan Swar. As an example, if you see you are playing sa, it will come from re sa or re. It can be from sa re or ga re. That depending on rag. Suppose if you play any raga, there how it is decorating, that you need to understand. But the major fundamental thing is it will comes from the previous swara or the next swara. It will comes like a gliding the notes. Why this Kan Swar is so important? So if you see, if I am playing, अगर मैं ऐसे बजाता हूँ, though it is सारेगामा पाधानीसा I played, but इसको अगर Kan Swar लगा के हम लोग बजाते हैं तो कैसे सुनाई देगी? ये Kan Swar. But let us sing sa 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 re ga ma pa dha ni sa. This I'm not singing sa, I'm singing sa ni, not ni. Ni coming from the sa ni. So sa ni dha pa ma, not शुद्ध ma, no, ma ga re sa. तो हर एक जगह में, each and every places I have used Kan Swar. So what this Kan Swar will do? Make it beautiful, make it melodious. Okay, when you play the normal note sa re ga ma pa dha ni sa, if we add little Kan Swar, it sounds beautiful. Okay, this is the major purpose of Kan Swar. Example, like if I am playing the rag, as I already presented the Saregama Pradhanisa, how do you play? Now play the rag Desh. Sa re ma pa ni sa re ni da pa. Ma re ma pa, because ga is varjit when ida going to the Arahan. So sa re ma pa. It is not the normal re. It is played in
ना, it is ni sa re ma pa. Pani not normal ni. Pasa or nisa. Sani. Is very good example here. Pa ni sa re ni. When I'm drop coming to the knee, komal knee, it is coming ऐसे जा रहा है pa ni sa re ni. Beautiful placing of Kan Swar. If I make it as a flat note, same thing using Kan Swar. This is the placing of Kan Swar. Another example, if you can go for this song. See how the note is gliding. Da 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 da. If you go for flat. But if I am using Kan, this is a Kan Swar. So remember this, Kan Swar will follow the adjacent note. In a rag, if swar is not coming in between that, then go for the adjacent note. Not too much deviation of the notes. It will come from the adjacent note, or re to sa, sa to re, or ni to sa, sa to ni. This is the Kan Swar. Okay? Difference between Kan Swar and Meend. ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, Kan Swar ज़्यादातर एडजस्टेंट नोट में ज़्यादा देखे जाते हैं, ज़्यादा होते हैं. एडजस्टेंट नोट लाइक रे टू सा, नी टू सा, इसमें होगा. और मीड क्या होता है, ज़्यादातर दो डिफरेंस नोट में होगा. हो सकता है इट कुड बी द एडजस्टेंट नोट, हो सकता है इट कुड बी द लॉन्ग नोट्स. एडजस्टेंट नोट का मतलब है ये कोई राग में जाता है तो उसका एडजस्टेंट नोट, अगर मान लीजिए वो राग में वो स्वर वर्जित है तो नेक्स्ट स्वर में आ जाएंगे, नेक्स्ट स्वर विल बी द एडजस्टेंट नोट. ये कान स्वर में प्रयोग होगा. मीर कैन बी ट्रैवर्स फ्रॉम एनी नोट टू एनी नोट. क्लियर? इट इज़ द बेसिक डिफरेंस. नाउ कान स्वर थोड़ा जल्दी होगा, लिटिल बिट स्लाइट फास्टर. मीन थोड़ा समय लेके प्रोसीड करेंगे. इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसीड. ग्लाइड, बोथ आर ग्लाइडिंग फ्रॉम वन नोट टू अनदर नोट. बट ये कान स्वर नोटिसेबल नहीं है ज़्यादातर. इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग दिस, एज आई हैव प्लेड इन अर्लियर टाइम्स, वॉट एवर आई प्लेड slowly so that you for your understanding, but it will be not that much slow. कान स्वर आप लगेगा कि एक छू के चले गए, just touch the note and leave it. So this is कान स्वर. मीर का एक संपूर्ण प्रयोग,
full presence, you will understand. You cannot avoid that meed. It's a full present, full gracefully it will present. That is called meed. Example. Now if I go, बहुत समय लेकर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मीन. बस कुछ नहीं, देयर आई यूज कान स्वर, बट ये दोनों में मीन की प्रयोग हुई है. गॉट इट? कॉमन मिस्टेक कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, कान स्वर लगाते समय खटका के प्रयोग कर देते हैं. कान स्वर लगाने समय लॉन्ग खींच देते हैं स्वरों को, तो हो जाता है मीर. कान स्वर बहुत छोटी सी जगह में स्पैन में मूव होंगे, बट इट विल बी ग्लाइड, बट दैट कुड नॉट बी नोटिसेबल. बहुत छोटी रे सा, बट दैट ग्लाइडिंग नोट विल कम रे सा. मान लीजिए एडजेसेंट नोट, तो रे सा, रे इज प्रोमिनेंट बट सा इज नॉट. तो क्या आप दिखाना चाहते हैं वो स्वर प्रोमिनेंट होगा, एडजेसेंट वाला स्वर प्रोमिनेंट नहीं होंगे. बट मीन में दो नहीं, दोनों स्वर की एकदम मात्रा एकदम सेम जाएंगे एंड ग्लाइड करके जाएंगे. दैट इज कॉल्ड मीर. तो हम लोग कान करते समय मीर की प्रयोग आ जाती है. हाउ टू प्रैक्टिस? वेरी सिंपल एक्सरसाइज. ये मैंने थोड़ा आस्ते आस्ते बजाया, ये भी आप आस्ते आस्ते प्रैक्टिस कीजिए. पहले तो प्रैक्टिस कीजिए हाउ टू ग्लाइड बिटवीन दिस टू स्वर्स, तो दैट विल बी योर फर्स्ट टास्क. नेक्स्ट रे सा, रे को प्रोमिनेंट कीजिए करके सा को छोटा कीजिए. फाइनली एक गाना बजा के मैं ये नोटेशन को, ये टॉपिक को आज एंड कर रहा हूँ. ये गाना है ये दोस्ती. देखिए कैसे मैं कान स्वर भी प्रयोग कर रहा हूँ, मीर को भी प्रयोग कर रहा हूँ. मीर If you understand this, what is Kan and what is Meed, I hope you can easily find out what is Kan and what is Meed in this Ye Dosti song which I have already played. Okay, please comment it below. What is Kan and what is Meed? If you still have a confusion, you can let me know. I will try my best to make it clear. Thank you. See you in another video. Bye bye.